Welcome home, dear brothers and sisters, hailing from the north of the globe all the way to the south. Welcome home, dear brothers and sisters, hailing from the east of the globe all the way to the west. Welcome home, professors, residents, CEOs, directors, scientists, leaders, experts, lifelong learners, entrepreneurs, engineers, philanthropists, and managers. Your alma mater welcomes you with open arms, with all the pride and joy of a mother welcoming his children. Your alma mater is proud of what you have become and counts your every success, just like a mother cherishing her children's honors. As we gather here today, it is with great joy and nostalgia that we extend a warm welcome to each and every one of you. Spanning from the pioneers of Batch 1, who first entered these gates 3 decades ago, to Batch 29, who recently graduated, our dear faculty members and office bearers. On behalf of the entire institute,
your fellow alumni and now the faculty member, me and Dr. Nabil, welcome you to this annual reunion 2023 and 30-year celebration of GIK. As we embark on this journey of reminiscence and celebration, let us embrace the shared memories that bind us together. Let us reflect on the challenges that we overcame, the friendships we forged, and the knowledge we gained. Let us celebrate the diverse paths we've taken, the achievements we've acquired, and the lessons we have learned. This reunion is not just a gathering, it's a testament to the enduring spirit of our institute and the lasting bonds that connect us all. May this gathering be filled with laughter and the joy of reconnecting with old friends and mentors. Thank you for being an integral part of this incredible journey. We have an excellent day planned for you, full of nostalgia, from the events ranging from funfair, athletics, cake cutting, comedy, mimes, etc. To get things started, let's join hands for the opening remarks of a very familiar face. Previously a faculty member, dean, then pro-rector, and now the rector of GIK Institute, Professor Dr. Fazil Ahmed Khan. Honorable members of the GIKI Alumni Associations, distinguished guests, pro-rectors, deans, faculty members, Dr. Jalil Mughal, Dr. Nabil, dear students, and the organizing committee, Dr. Shamsa and Dr. Nabil. Assalamu alaikum and it's a great honor for me to welcome you all, the members of the Alumni Association at the GIK Institute. It's a homecoming. And I'm sure that your linkages and your bond with the Institute is very important, and it's very big inspiration for all of us and a big motivation for all of those students. But let me take this opportunity to first thank the President of Alumni Association, Mr. Habib Ahmed Khan, who could not be here because of his out of country, but probably he is joining on the video link, and his team, Executive Committee, and all of you who have been supporting and promoting the GIK Institute as a brand of academic excellence in Pakistan, and I'm sure one day it's going to be one of the top few one of the top few universities of the world, and that can only be possible when we work and work hard. And in the last 30 years, which is not a very long time in the history of the institutions, but certainly the GIK Institute has done well, and I would like to thank the founding fathers, the important leadership of Mr. Ghulam Isaq Khan, and then Dr. GIKI Khan and his team member had so pressed in the vision and the planning and establishment of this institute, and the current leadership under Engineer Singh Saifullah Khan, Executive Director, Mr. Shakir Durrani, and members, Board of Governors, who have been instrumental in bringing the quality of education and promoting the linkages in the country. As far as the institution's strength is concerned, you probably have noticed that in the last 30 years, the institute has done well and we are looking good, but perhaps it's a long way to go to look great, and for that, I look forward to have your support and cooperation, because you are the important stakeholder of this institution, and you have to help and drive various initiatives so that we can contribute not only the quality of education, but the emerging fields of science, engineering and technology where the youth of this country can benefit. And you now, most of you, on a very senior leadership positions in government departments, in national and multinational organizations. And I'm sure that with your help and with your fundraising and other opportunities and linkages with the department can really bring a lot of change in
institution. GIKI Alumni, you probably have noticed in the last 30 years, started with 4 or 5 programs, 124 first batch, and now the GIKI Institute has 2,400 students and 36 programs, 13 in undergraduate, 12 at master and 11 at PhD program. Very recently, the Institute has been focused to launch new programs in cybersecurity, data science, software engineering, along with emphasis on the new initiatives which are going to come from the clean and green technologies. The Institute has been able to also develop the infrastructure with 2.2 megawatt solar power project that has been recently accomplished. And now we are in the process of strengthening our linkages with the industry. Our audit and catalyst has about 700 companies database. But certainly the linkages with international organizations, universities, and also in Pakistan, the industrial cooperation has been instrumental in terms of providing the internship as well as jobs to the students of this institution. And I'm sure that with your presence today, this is a big opportunity for us and for the deans and the faculty members to learn and to interact with you so that they can also engage and see that if they can get support from you in terms of webinars, in terms of seminars, short training workshops, and your presence in the department and interaction with the students. I'm sure it's going to be a unique learning experience when you would share your experience, expertise working in your life, in your career, in your progression. And from that perspective, I think it's going to be a unique opportunity for all of us to see that how well you contribute at national and international level, but also would like to strengthen our linkages and cooperation. I'm sure that the Executive Committee of Alumni Association and Mr. Habib is going to give details. But let me also thank all of you for your support, for your cooperation in fundraising, in scholarships, and also providing help to the institute. And big round of applause for all of you that you have provided. Ladies and gentlemen, people build institutions and institutions build people. And I think this institution with 7,000 alumni membership that we have got in the last 30 years, I think it's a big resource for us in the institute to learn from you and see how you can help this institution, your alma mater, and contribute in the field of education, science, engineering, and technology. And I met most of you who have come from outside Pakistan. Thank you very much for taking all these arrangements and initiatives to come all the way to visit this institute. And certainly your presence is a big source and mark of inspiration for all of us. And you might have noticed that in the last few years, in spite of challenges in the country and a shift from engineering programs to other programs like management sciences, IT related fields, engineering programs have been doing pretty well as far as our institution is concerned. Our intake, our first year quality of the student has increased after COVID, and we look forward to have your suggestions, your support, your comments during this session. And you probably would have noticed that in the future development, we are planning to have not only the consolidation of our existing programs, graduate program in particular, and research centers in quantum computing as well as in the field of cybersecurity and green hydrogen and green technology center are just a few initiatives that are under consideration so far as the research and progression is concerned. In addition to that, the GIKI Institute Board of Governors has decided to have a sub-campus first in Islamabad, and you might have noticed that a few days back, visit of Prime Minister, good support from the government that they would like to consider the option for having
sub-campuses in all provincial capitals of the country. But then at the same time, we have to see that our consolidation at the main campus will remain at focus and ensure the quality in terms of visibility, international ranking, and also promoting research and linkages with international universities of the world. Let me thank you all, but first of all, let me thank the organizing committee. A big round of applause for our organizing faculty members who have contributed. Dr. Junaid, thank you so very much for joining on this occasion, and Dr. Jamilun Nabi, you have made excellent contribution, both of you, and all the faculty members in the past and who have been contributing now. A big round of applause for this board and for the we all take inspiration from Iqbal, and let me close with मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया को समंदर तलाश कर. Thank you so very much. Thank you very much, sir, for the very encouraging and inspiring remarks. By the way, show of hands, sir से हमें 101 किस किसने पढ़ी है? बात करें। आगे बोलिए। मेरे बैच में काफी लोग हैं। I think थोड़ी देर आप सब लोग ये सारा भी स्लाइड बंद करके फेस डायग्राम खोल लेंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। इस आपको बताया जाता है। So moving on, Alumni Association plays a very important role. It is basically a bridge between the institute and the alumni, or mutually beneficial is सबके interactions possible है और improve on this. And here to talk to you about that is the current president of the GIKI Institute Alumni Association, Barrister Engineer Habib Ahmed Khan. He couldn't join in person, flights का issue था, but he is kindly here with us online. So Habib, you can hear me? Yes, I can. Yes, I can. So Habib, you can start me. Dr. Fazal Khalid, Satara Imtiaz, Director GIKI, Mr. Shakim Dunani, Executive Director, SOPRES, Pro-Rectors, Deans, Faculty Members, and last but not the least, alumni of the last 30 years, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. I hope you all can hear me, and I am audible over there. First of all, I would like to welcome you all to this momentous occasion to celebrate the 30th anniversary of GIKI, an institute on whose platform we have stood tall throughout our professional careers, gaining recognition nationally and internationally, and cherishing it as our alma mater. Although I cannot join you today due to some professional and personal travels, I am with you in spirit, and my heart and thoughts are deeply embedded with you. We embark today on a journey of self-discovery in which we will reflect upon the moments that shaped us as individuals and the contributions that we have made to the legacy of our alma mater. As we reunite to celebrate 30 years of growth, achievement, and friendship, I would request you to please rediscover and reunite and re-engage with each other to foster memories which will resonate with us for years to come. Given the short period of time which has been allocated for our speech today, for about 10 minutes, I would like to simply move through to our presentation, focusing on the key areas and the slides that I would like to share with everyone.
can see the slides. The GIKI Alumni Association was founded in 2003, and from its humble beginnings, through the first president, Irfan Chaudhary, and Mr. Junaid Khalid, who is also like an elder brother to me, the work that they've done built the organization and took it to new heights. And we stand today in 2023 where we have raised almost about 32.4 million, supporting 52 students. A further 7 million has been pledged, and almost 10 million has been donated for the endowment fund, in which the first seed funded by the endowment has been set up. We now have an improved global network structure and established chapter chairs, whereas we have been interacting throughout with different areas and students, alumni in different regions of the world to establish these layers within which we have chapters and which can actually improve our engagement. Working committees have been established which will further help us in doing the good work that we have been doing for the last many years. We've also established the GIKI Alumni Association merchandising store online, which will help us raise funds. We've also formed a collaboration with Jazz Cash. We've signed MOUs with Pepra, the Doubt Foundation. These are all activities that have been spoken about in more depth in the coming slides, so I will move forward with that. Just to introduce to you our team, Muhammad Azhar Khan is our treasurer from batch 15, Farooq Zaman, our vice president of marketing from batch 2, Zain Hassan, vice president student affairs from batch 2, Ms. Amna Shahid, vice president global batch 14, and last but not the least, Mr. Abid Javed, our office manager, who is the heart and soul of the organization. We have representation globally across all major industries, companies, academic and government institutions within and outside Pakistan. Our email distribution list stands at about 2,500 plus. We have LinkedIn members at about 3,580 plus, Facebook groups at about 5,000 plus. Global regional coordinators have now increased to almost about 52. Whereas they stood at about 32 last year. Chapter chairs have increased to 65, starting from 12, and we have batch point contacts almost about 83. There are multiple WhatsApp groups through which we engage with our alumni across the globe in trying to raise funds, engage them through the activities that we have and the channels that we use for our social media. These are some of the venues that we use for our social media engagement, including Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Workspace, Twitter, and Slack. Just to give you an idea about the operational or working of the GIKI Alumni Association, these are the 5 main ways in which the institute is organized. We have the Alumni Association, which also gives representation in SOCUS with the institute. Then we have a general body and advising groups such as the think tank, which helps us in taking new initiatives each year. The global organization or program has been revised, in which we have added more regional coordinators and more chapter chairs, whereas the president and the executive committee overlook all of the activities which are taking place globally. As I shared with you, in the past we had 32 global alumni and 16 chapter chairs, whereas today it stands at about 52 with 65 chapter chairs. This is a list which has been provided online. You can also go and contact each individual in case of any, if you are traveling in that region or you have something to do with a particular chapter chair, you can look them up online and contact them directly. The link shall be shared for this presentation and all these lists at the end of this presentation.
We have also recently signed an agreement with Jazz Cash, which will open another avenue of funds, of raising funds. Historically, we have always been focused on raising funds through our alumni. But this year, we have taken an initiative in which we have signed an agreement with Jazz Cash, whereby we will be able to utilize the platform and the user base that they have of almost about 1.7 million donors to raise funds for our students and utilize that for financially challenged students. So this is something that we've done this year, and hopefully it will start reaping benefits over the next few months. And if this is successful, we also aim at forging similar kind of alliances with the other telcos. We also help in bringing together GIKI with NEPRA and trying to establish avenues where our students can gain internships, apprenticeships, and better opportunities for employment. There was also talks about having a collaboration between GIKI on the same lines as the state institutions are forming with other universities across Pakistan. And this is something which has been at the core of our tenure and work that we have been doing for the last year or so, in which we're trying to help establish linkages with state institutions wherever we can to help our students, to help our alumni in getting better opportunities. We also had a meeting of our business group this year. We do intend to establish a business council while also establishing a business network within the alumni. These are two separate and distinct just groups that we will establish in the coming days or months, and they will be focused. One will be focused on providing opportunities to the businessmen within our community to network and help each other, whereas the business council will be focused on providing to our alma mater, focusing on the institute and helping it, as we have seen the business councils do with different universities and institutes across Pakistan. I'm also pleased to share with you that this year we were able to establish the first endowment seed in the name of Sayyid Akbar Ali from Batch 1 for an amount of 10 million, which was funded by his family, his elder brother Sayyid Haris Ali Saab. I am most grateful to SOPIS, to the Institute, to Rector Saab, Executive Director, all of them who played a vital role in making sure that we are able to not only establish the first seed, but set a precedent and set a model which can be replicated in the days and months to come, where we can set up similar seeds and have the endowment fund functional in a manner that more and more seeds can be built and set up in this way. We already have in the pipeline almost about 3 seeds which have been pledged from the batches 1 to 4, whereas we do target to have almost about 10 seeds done by the end of the tenure. To share with you or give you an overview of the fundraising activities that have taken place over the last 3 years. In 2021 to 22, we raised about 26 million. In 22-23, we raised about 32 million. This year, we raised about 32.4 million, but with an additional 10 million of the endowment fund, which takes our total to 42.4 million this year. All of this money has been put to use or is being utilized to help financially challenged students achieve quality education at GIKI. In recent years, many batches have also started to fund their own seats through their own groups, and almost 11 scholarships and financial assistance opportunities are being supported across various batches today. In total, GIKI Association has supported almost about 350 plus students to fulfill their dreams. Just to highlight some other financial initiatives that the GIKI Alumni Association is taking,
The first is about the FBR. We're trying to gain tax exemption from the FBR for all the donations and fundraising that we've done. And in the future, to make this process seamless, we're also partnering with Visa and MasterCard so that all our overseas donors do not have to face any challenges or tax deductions when they're making their donations to the GIKI Alumni Association. For financial transparency, the previous president, Mr. Junaid Ali, engaged JASP, a reputable accountancy firm, and we have taken that forward. We're carrying on with them. They're doing wonderful work, helping us with all of these initiatives. The PCP certification is also underway, something that takes a lot of time. So our in-house legal team, my own legal team from the office and the Alumni Association, we're all focused on getting the PCP certification done, because the FBR NOCs for the tax exemptions are based on the PCP certifications that we can gain. A process which normally takes maybe a year or so. We're trying to expedite that and finish it within about 6 months. Once we have our PCP certifications, we can also get the FBR NOCs. The community services, as we have shared in the past, that the Alumni Association supports helpers, staffs and their families at the Girls Hostel through their retirement and their old age years. Another initiative that we took this year is that we have approached various countries and various institutes, universities globally, to establish an international collaboration for GIKI. In the future, we also intend to make some international visits to the US and also the UK, where we can help meet with our alumni and also universities, helping in fundraising and also establishing linkages with key institutes. We will be sharing more details of this in the coming months. Alumni support since 2004, GIKI Alumni Association has been supporting alumni and families who have either passed away or in medical financial aid to enable them to be financially independent. This is something which is very near to our hearts, and we always try to help those who are in such crisis or are challenged. The iCare Foundation has been working with GIKI Alumni Association since 2020 and has helped us as a 501c3. It has helped us to make the transactions of the funds from the US to Pakistan, and it also has the corporate matching facility in which companies like Google and Microsoft, if our alumni working in them, send their money through the IKI. These corporations will match that funding or those donations, which is an additional benefit for us, apart from the tax deductions or the minimum administrative charge that IKI is charging. But we are exploring other options as well to set up our own 501c3, given that in the future we go to a point where it is feasible for us to do so. Multiple feasibilities have been done on that, and for many years we have been debating that internally and externally whether to set up our own 501c3. This is something again which in due course of time will be done, and we will be sharing more information on this with you. Towards CDRs, Salman Rafi, one of our alumni, has been working with a lot of passion and heart in doing social work through the CDRs platform, and we are pleased to share with you that we have partnered with them for collaborating, for setting up orphanages and schools near to GIKI, which can help our employees, people who are working, the staff at GIKI, and also help in garnering talent across Pakistan in these regions to come and study at institutes like GIKI. They also recently visited GIKI, in which they had a very good session with the students, and I believe have signed an MOU as well. For the merchandising, you can go to shop.gikialumni.org. This is our website, and still there are things which need to be
improved, but it is the first step, the first initiative that we've taken in launching these products and selling them online and making them a separate source of revenue for us in the coming days. Again, coming to the structure of the organization, we have our executive committee, then we have our supporting committees, we have the Sophos board representation, we have a think tank, the children body, an ex-president's group, a group with our leads, the student club leaders, and the EC and our normal director. So these are the operational teams and the committees that we use for our operations. Opportunities that we have, the GIKI value story. One of the concerns that we have seen, which is a recurring concern over the past years, is the cost of the tuition fees, which is prohibitive as compared to other institutes in Pakistan. And it tends to cause a lot of negative publicity for GIKI, being a very expensive institute. And while other institutes are offering similar degrees and programs at cheaper costs. As the Honorable Director just shared, that in the future there are other campuses being set up across Pakistan which may help with this situation and to help in bringing down the cost. But Pakistan faces serious challenges economically. And the aftermath of that shows in GIK as well. And we cannot see GIK in isolation of the national politics and our economy. So these concerns, while they're valid, they remain as a challenge for us to solve in the coming days with our support, with our collective wisdom, to find a way that we can give more value for the fees that is being charged. The alumni engagement, out of 7,000 plus alumni, only 50% are enrolled at any one social media platform. The challenge has been to engage the remaining 15% alumni and include them in the activities, initiatives that we are taking globally. For that, as I shared with you, we have already increased the number of our regional coordinators by also increasing the chapter chairs by almost 3 times or 4 times. And we do believe that in the coming days and years, with more empowerment to these chapters, to these cities, to our communities, we will be able to increase this engagement. Although a slow process, we are already focused on it, and we would welcome your support and any ideas that you would like to share with us. Volunteering and leading events and initiatives for GIKI Alumni Association is something which is at the forefront of our activities. Diversity and inclusion. We've always tried to support the female engineers or women engineers across alumni and GIK to promote inclusion and collaboration across teams. One of the MOUs that we signed with the Dowd Foundation was particularly to support more female engineers to get apprenticeships and jobs with the leading these corporations across Pakistan. This is something that we have been working on, and local chapters and structures within and outside Pakistan have been engaged to improve the situation. At the end, I would like to share a few snapshots of the get-togethers that we've had across the world in trying to improve engagement, share with them or disseminate information about all the activities that have been taking place, and try to build a stronger community in which we have more networking. So these are just snapshots of that from various parts of the world: Dallas, ASA, the Kingdom of Saudi Arabia, Reading, the UK, in Oslo, in London, in Jeddah, Al-Qabat, ASA. And these are just snapshots of some of the activities that have taken place over the last year. At the end, I would like to thank all of you for your support. I would like to thank the organizing committee for organizing such a wonderful reunion today. I would like to thank the administration. I would like to thank Sophos. And last but not least, I would like to thank all of our alumni across the world
without whose support, we could not be able to do what we are doing. So thank you once again. आप लोग who is organizing? I hope you guys are not too bored already. हम सब की GIKI की जो graduates हम सब की weakness होती है presentation कैसी आती है हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है, but I really hope आप इनकी presentations is recovered because this is a very very active organization and a lot of people are getting benefited from this alumni association. Okay, so इस campus में गुजारी जिंदगी हमारी बहुत ज़्यादा कैंपों से हंसी मजाक से बिल्कुल इट वाज फुल ऑफ लव। हम अपनी अगर 4 सालों को याद करें तो भी चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा फ्लैश करती है कि हम टब पे बैठ के ये लगा रहे होते हैं, इंतजाम कर रहे होते हैं और टी स्टेयर्स के ऊपर बैठ के धूप सेक रहे थे या फिर मजाक दोस्तों के साथ चल रहे थे और अगर थोड़ी बहुत टेंशन होती थी तो दोस्त जुटते लगाना किट लगाना शुरू कर देते थे to forget those things and tensions very quickly, very easily. Since it's a live-in campus, और भी ज़्यादा मजा आना शुरू हो जाता था हमें। अगर हमारा क्विज अच्छा होता था तो कहेंगे, अगर बुरा होता था तो और भी ज़्यादा कहने लगाते थे हम। तो आज सब हमसे इस बात पे एग्री करेंगे कि जितना हम 4 सालों में हंसे, शायद दोबारा हमें इस तरह का मौका दोबारा मिला हो दोस्तों के साथ इस तरह की टाइम स्पेंड करना, मोमेंट्स बनाना, मेमोरीज बनाना। So let's just revive one of these moments and let's just welcome Zahid, Hassan Zahid from CTES for a stand-up comedy session, please. CTS presents GIKI music team. On bass we have Suleiman. On rubab we have Wajid. On lead guitar we have Essen. And on the drums we have Musa. And I'm the lead vocalist, Sufyan Danish. Let's go. This first song, if you know this, please sing along.
This next song is GIKI Alumni. And on Tumbak we have Ajmal. Please give a round of applause.
Very beautiful, very nice. So now we have Ahmed Javed from batch 19 who is going to perform from us from the audience. Let's give him a big round of applause. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद जावेद है और आई एम फ्रॉम बैच 19 और स्टेज देख रहा हूँ कोई 11 साल बाद। आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नक्श और स्टेज पे बहुत परफॉर्मेंसेस दिए तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है और डेजा वू भी हो रहा है। और लड़कों ने कहा साथ परफॉर्म करेंगे तो एक ही गाना आता है हमें बस, तो उसको ट्राई करते हैं परफॉर्म करने की और आपकी तालियां चाहिए होगी। और ये गाना मेरे सारे दोस्तों के लिए जो यहाँ आ सकें और जो नहीं आ सके। दिस इज फॉर बैच 19 एट GIKI। कुछ बात
Okay, next up we have Salman Rafiq from batch 2. He's an excellent drummist and he's here with his family. So let's just invite him. Big round of applause. I'm Salman from batch 2. With me is my wife, Saima from batch 5, and my two sons, Sinan and Hassan, who are at the age where they can still take the stage, and little Daryan, who will soon take the stage. Thank you very much to the welcoming and to the honor bestowed upon us, all of us alumni, by everybody at GIKI. We are no strangers to this stage. It's a stage of creativity. It's a stage where the creativity starts here but goes beyond this hall, beyond this campus. I want to tell you, anywhere in the world that I have been, GIK has been with me. I am GIK and we are GIK. Before it's time to shake off the rust, there have been many instances in my life where I would have never been the man that I am with the capabilities that I have had if it had not been for GIK. We owe this. And are we 7,000 strong around the world? The number before the strong is not important. We are strong.
Hi everyone, this is Amna from batch 28. I was a student of FME and I graduated 2 years ago and I am a little nervous. Never taken on such a huge audience, but let's do this.
मैं ट्राई करता हूँ।
part in this performance, all of you, and for applauding these great singers and performers. So we will start with the next section. So now tables have turned. अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि आपका सफर GIK का 4 सालों का कैसा रहा, GIK के बाद का सफर कैसा रहा, क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ ऐसी चीज थी जो आप इधर से लेके गए और आपकी जिंदगी पे उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला. So over to you guys. आप में से कोई भी अगर कुछ भी हमसे कोई स्टोरी, कोई इंटरेस्टिंग बात, कोई फनी चीज कुछ भी शेयर करना चाहे, we would love to hear from you guys. Please raise your hands and we will bring the mic to you. Take setup पर एक शॉट करते हैं प्लीज. Folks गिरना करें. Thank you. See, anybody wants to share anything, please? Raise your hands. Ali, going on, please, Ali. Let's repeat where you are. Hello, yeah, best to, I want two guys who have been very shy. So shy you cannot imagine. And the way they got themselves transformed is beyond my or your imagination. Gentlemen and ladies, I would like to get into Mr. Ali Bhatt and Tahirari. Bench to bench to. Yeah. Nice. The bench to both are even underdogs. For example, they used to be doing quiz competitions. There were 4 GPA guys. They used to make one group, and we made another. The other backbencher, and we went ahead and won. Anyways, तो गणमेश के जो लोग हैं, I would really like to tell their stories. So, big round of applause for Gणमेश group. बैच टू खुर्रम और ये सब जब हम यहाँ पे आए और we were only a student FSC करके यहाँ पे आए, पहला जो हमारे लिए एक खौफ था वो टोटी की गालियाँ थी बैच वाले से अक्रॉस द बैच, but it was like a haunting thing कि कैसे वो होता था. Then water fights, first time अकेले रहना, दोस्तियाँ बैच में, water fight, quizzes, pressures, teachers, दोस्त जो कुछ दोस्त जो हमारे साथ नहीं रहे, कुछ दोस्त जो नहीं आ सके. But overall we have learned a lot. और लाइफ फ्रेंडशिप्स टाइम जो लर्न किया इस लेवल पे पहुँचे. और खुर्रम लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का है और पढ़ने की मेरे पास आता था, तो आई टॉट हिम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द होल नाइट और ही गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन हिज कैरियर. So he got 4 marks out of 100. So this was like all which we have like spent the years together, or we have spent a good time together. Or now I will pass on to Puram. बहुत कसे नसी से इसने अपना बताया. One of Pakistan, one of the largest school chains. He is the owner of that Mashallah finance. More than 15 branches there in outside Pakistan. Ali Bhatt used to be the youngest, and his name was ABC. ABC. Yes, the most handsome guy. Handsome को आप बता के क्या देंगे? I leave that to you. Ali Bhatt, please. Ji, I think I was really questioned to learning by my mother. First, I would say Lamia for general assessment because she's not there anymore. But what she did was really amazing because if you could tell her a very good experience. Now, those 4 years were really tough, but the family and what the friends, they are there for me all the time. They were there for me, and they are whatever. This I really cherish. And I really feel
ऑनर इन्होंने मुझे कहा हमारे साथ नेक्स्ट I will share. It's really an amazing journey of friendship, love, brotherhood, and I thank GIKI for giving me that opportunity. And beyond that, it doesn't matter what it is. Once you are out there, you have to stand to this guy. And we all have very good experience for 100 my friend and my teachers. Yes. Thank you very much, sir. So let's record head of the universities. Thank you. G, any other person who really wants to G? Emma again. अस्सलामुअलैकुम, अहमद अगेन। अच्छा, मैं एक छोटी सी बताइए स्टोरी है हमारी, तो सुनाते हैं आप लोगों को, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। हम लोगों का जब लास्ट ईयर चला तो मैं आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर था हमारा, तो मैं एक बस जा रहा था, GIKI का माशाल्लाह पानी से ना लगा, अभी भी वही हालात है बालों के हिसाब से कह रहे हैं, तो बाल बहुत गिर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों का यार हामिद मैंने ना टेंडर बनना है, मुझे समझ नहीं आ रही है बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा यार पेंट करवानी है, चल यार मैं भी करवाता हूँ पेंट। तो हम दोनों ने ना हॉस्टल फिक्स से हम निकले, हमने कहा यार बस ना पेंट करवाते हैं। रास्ते में एक और दोस्त था साथ, उसको कहा यार अपना पेंट करवाने जाते हैं, तुम्हें चलना है? तो कहते हाँ यार मैंने भी चलना है। अच्छा वो 3 हुए, उसके बाद हम हॉस्टल कॉरिडोर में फिर रहे, तो 4 के 5 के 6 और 20 बच्चे ने इसी तरह हमारी डबल नाइट के इकट्ठे हो गए। अच्छा कुछ लोगों के साथ हमने जबरदस्ती कर दी दोस्तों के साथ, और कुछ ने यानी कि मेरे भी करवा लिया। तो जी हम टक शॉप के साथ गए, वहाँ पे 20 लड़कों ने ना लाइन बनवाई। मैंने सबसे पहले टेंट करवाई, मेरे बाद हामिद ने करवाई, उसके बाद जो हमें डबल 19 का लड़का मिला ना, हमने जबरदस्ती सबकी ना टेंट करवा दी। अच्छा हम लोगों ने शोल क्या किया कि ऑन आवर वे बैक ना 3-4 दिन हमने ये किया। अब हमारे से जो जूनियर्स होते थे ना, कोई लड़का देख रहा ना मम्मी डैडी का पकड़ के, उसके पीछे दौड़ रहा था, वो इसको देख रहा, और उन्होंने ऐसे भावना चारों ने फुल पीटी ऊपर ना। तो 3-4 दिन इस तरह चला, और जब हमने क्लास के लिए मुझे याद है हमारे कुछ टीचर्स थे, सर सुनन माफ थे, सर निसार थे, सर मदर जावेद थे, इनकी क्लास में ना हमने डिसाइड किया कि हमने टेंट के साथ टाई लगाकर चलें। तो हम सारे हमारे पिक्चर्स भी हैं, कभी मौका मिला शेयर करेंगे। तो फ्रंट रो में हम सारे जितने बैठे थे, हम सब ने जो है ना वो टी-शर्ट और निकरों के ऊपर टाई लगी। तो दैट वाज अ वेरी फॉन्ड मेमोरी मेरे जो है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ GIKI। That becomes foolishness. वो ही नहीं जी सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साबिर है, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, पर एक हिस्ट्री है, उसको मैं पूछना चाहता हूँ किसी को सही हकीकत मालूम हो। GIKI की लाइब्रेरी की मुझे वाकई क्या सीक्रेट है? कोई ऐसा बंदा देखा जिसके जो इधर बहुत पुराना है, maybe our current director Dr. Fasil Khanna। Thank you very much। नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा हमारे साथ कुछ एक्स फैकल्टी मेंबर्स भी मौजूद हैं, ऑफिस बेयर्स भी रहे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जमीर साहब प्लीज आप शेयर करें, डिफरेंट बैचेस बैठ के कौन सा बैच है जिसने सबसे ज़्यादा आपको टच किया है? थैंक यू वेरी मच। मैं जब आया था तो बैच 9 जा रहा था, और बैच 10 को मैंने पढ़ाया था। आई थिंक जुनैद वाज आल्सो विद मी, वी केम ऑन द सेम टाइम। मुझे इस वक्त याद आ रहे थे हमारे सीनियर्स MIQ साहब, मुझे याद आ रहे थे टीच अफेयर्स, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। और जब सर आते थे इस हॉल में तो मैं देखता था कि मैं नया आया था, सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मैं हमेशा सोचता था कि यार मैंने आगे बढ़ के ना इनको फॉलो करना है, और किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे बहुत जल्दी टीच स्टूडेंट अफेयर्स मुझे बना दिया गया। वो दैट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर। But I had some wonderful time and some wonderful
institutions, this bonding. And hats off to the rector, to the Alumni Association for arranging this function and for inviting me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Doctor. First of all, Shukriya Rector Sahab, management for inviting me. And I spent from 2003 to 2013 in Dhabali, मुख्तलिफ कैपेसिटीज में काम किया. Dealing with Indians is always a pleasure. Learned a lot from them. They challenged me and एक चीज शेयर करूँगा. हमारे बेस्ट टाइम के थे खितराम साहब, स्वेट खितराम, जमील ऑफिसर नंबर थे, one of the most बढ़िया पर्सन. तो मुझे ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर जब मैं टीच कर रहा था तो मैं था कि मेरी स्टूडेंट एवोल्यूशन कैसी. तो आई वांटेड द होल क्लास टू पार्टिसिपेट इन द स्टूडेंट. मंडे को एवोल्यूशन थी तो संडे नाइट को कंसर्ट था, इनका फेयरवेल कंसर्ट भी था. तो मैंने कहा यार खितरान में किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ तुम हो जिस तुम ट्रस्ट करते. So I want the whole class tomorrow in the classroom at 9 AM. और मैंने आपसे बात करनी है. जब मैं सुबह क्लास में पहुंचा तो पूरी क्लास बैठी थी और आधे डेस्क के साथ रख के सो रहे थे. So I didn't teach anything. मैं तो इधर रुका और फिर मैंने कहा यार एवोल्यूशन का वो मजा. So वो फ्रॉडिया में it can perform. So he's a very good friend of mine now. Thank you very much. Thank you very much, sir. बैच 1 से हमारे साथ कौन है, हाथ खड़े बैच 1. अच्छा, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि क्या गलती कर बैठे, ना हम आते ना ये सिलसिला चलता. तो ये जो बाकी सारे बैचेस हैं ये देख लें. आप सबको हंसाने वाले कौन है, आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे. कोई भी काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कुछ बताने का. तो सबसे पहले ये चीज़ बैच 1 की हमारी एजुकेशन सीजन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वी वर दी ओनली फ्यू गाइस ऑन कैंपस एट दैट टाइम. और हमने इसको बनते हुए देखा. हमारे टीचर्स फैकल्टी बहुत डेडिकेटेड थे, स्टूडेंट्स शुरू में इतने डेडिकेटेड नहीं होते. आई थिंक सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है कि ये फॉर्मेशन डाला है वो मैं बैच 1 में, बिकॉज इत्तेफाक था कि हम भी FSC कर रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी है. एक साथ पहले भी हो सकती थी, एक साथ बाद भी हो सकती है, एक साथ बाद होती थी. वुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी और इट चेंज अ लॉट. वी सी के चेंज द लाइफ ऑफ एवरीवन ऑफ अस, गुड इन एनीथिंग और इन अ गुड वे. वी सी ऑल ऑफ फर्स्ट बैच kids performing really well with leadership position in the we also were not surprised. Yeah, story में याद किया इंडस्ट्री we had a lot of fun at that time. और इसी तरह से water fights होती थी, वॉलीबॉल होती थी, कार्ड्स होते थे. इनफैक्ट when we visited hostel last night हम लोग काफ़ी सुंदर और काफ़ी डर थे, क्योंकि हमारे ज़माने में बहुत शुरू होता था. कॉमन स्कूल होते थे और कम अक्सर ओवर स्कूल होते थे, दोस्त किसी के भी कमरे में चले जाते थे. हमारे साथ चाय शाय चल रही होती थी, म्यूजिक चल रहा होता था और एक दूसरे को आवाज़ें देने जा रही थी. तो वेरी लाइवली अच्छा से वही कलर नहीं था खतरनाक है. वही हमारे साथ नो ईच अदर बाय नेम और अभी तक सबसे फर्स्ट टाइम से लेकर सबसे पहले हमारे बैच से इस बार तो सेकेंड बैच भी आया था. बात से नजर आ रही है. कल से कॉम्पिटिशन चल रहा था कि हमेशा फर्स्ट बैच की तरह सेकंड बैच की कम होती है. यस्टरडे देयर वाज अ मोमेंट इन फर्स्ट बैच से फोर होते थे, सेकंड के 5 होते. अब हमने उसको कर लिया, सही कर लिया. तो बहुत सारी गेम्स होती थी, क्लब्स सारे स्टार्ट किए. इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो लास्ट टाइम काफी सारे क्लब्स के लोगोज हैं. दे स्टिल द सेम फर्स्ट बैच के नाम भी एक्टिविटीज भी काफी सारे दे स्टिल द सेम. तो उसमें काफी चीजें गलत भी की थी, उनको ठीक भी किया जा सकता है. ओके, अगर आप लोगों को चेंज कर रहे हैं तो करेक्ट कर रहे हैं. चलिए, थैंक यू सो मच.
इंटरेस्टेड इन द प्रोफेशनल लाइफ, ऑल्दो उस वक्त GPA कम ज़्यादा भी हो, कुछ ना कुछ बन ही जाता है आपका, बिकॉज आपको इतनी ज़्यादा लग चुकी होती है लड़ाइयाँ कि जिसकी कोई हद नहीं. So we would like to request one more person because of the shortage of time. एक और कोई, if you want to share the story. ये मुनीर उस्मान है, बैच एक मेरे बैचमेट हैं और मैंने हाथ खड़ा किया है. एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था हमारे में. एक टीचर होते थे, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत से लोग समझ जाएंगे. वो बहुत ज़्यादा रेगुलर लेक्चर देते थे, सूटेड बूटेड रहने के, टिप टॉप में. तो एक दिन उन्होंने, पठानों का कल्चर होता है चादर पहनना, आज मैं ट्राई करके आता था एज सून एज पिंडी से निकल के ये कट लिया तो देखना है बंदा चादर पहना हुआ है. तो वो एक स्टूडेंट चादर पहना हुआ, तो उन्होंने खड़े होकर उसको आधा घंटा लेक्चर दिया. तो उसने जब ऐसे ही सबसे मेंशन किया तो सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि उनकी क्लास में सब चादरें और टोपियाँ पहन के जाएंगे. तो तकरीबन वो उनकी बड़े लेक्चर हॉल में क्लास होती थी, आधे बैच की, जिनमें 70-80 लोग थे. तो सबके सब लोग चादरें और टोपियाँ पहन के गए. और जैसे ही सब लोग घुसना शुरू हुए, वो नीचे देख रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा और उनका मुंह खुला का खुला रह गया लिटरली. वो इतनी देर तक देखते रहे और फिर जब सब आगे बैठ गए उसके बाद उन्होंने उसी चीज़ पे लेक्चर दिया. 50 मिनट्स के लेक्चर के बदले उन्होंने 1 आवर 5 मिनट्स यूज़ किए. इतना कि जब उन्होंने छोड़ा तो नेक्स्ट लेक्चर वाले टीचर क्लास बंद करके और बहुत सर्टिफिकेट और उन्होंने भी फिर हमें खूब सुनाया. अच्छा, एक सेगमेंट जो हमारी रह गई है, यहाँ आपको शायद मालूम हो कि बहुत से एलुमनाई, फैकल्टी और स्टाफ के मेंबर भी हैं. तो वो हाथ खड़े करें अपने जो जो फैकल्टी में है इस वक्त. एलुमनाई हु आर आल्सो फैकल्टी एंड स्टाफ, राइट. तो इनमें से किसी से मैं तासुरात लेना चाहूँगा. मुझसे जब पूछते हैं लोग कि आप क्यों वापस आए, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, मैं अपनी फीस वापस ले रहा. अब वो इन्फ्लेशन की वजह से पूरी हो ही रही है, तो हमारा जो देखते हैं कब पूरी होती है. तो किसी एक से अली से ले लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. अली शौकत, बैच 20. तासुरात देने से पहले मैं एक पॉडकास्ट बनाना चाहूँगा कि मैं तासुरात. तो इट वॉज माई फर्स्ट डे एट GIK और हमें ब्रीफ किया गया था कि यहाँ एक्टिविटी हो. तो मस्जिद में हम बाहर पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो कुछ दरसे कुरान के सिलसिले में लोग बाहर खड़े थे. तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल का नंबर नाम में दरसे कुरान होता है. सब ने टोपियाँ पहनी हुई थी, कुछ की दाढ़ियाँ भी थी, लेते हमें. तो जो हुआ वो तो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन दरसे कुरान नहीं हुआ. अच्छा, हमें बताया गया था कि एंटी रैगिंग कमेटी की बैठी हुई है. तो उन्हीं के कुछ लोग गेट पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा आप साथ रैगिंग नहीं है. उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने कहा इस नंबर पर कॉल करें, ये एंटी रैगिंग कमेटी है. वो हॉस्टल में थे. हॉस्टल में हम गए तो वहाँ पर दोबारा जी साला ज़्यादा था. तो वहाँ से जब हम निकले तो फिर हमें किसी ने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ. मैं कहता GIK को मैंने डिफरेंट रोल्स में देखा है, एज स्टूडेंट, एज ग्रेजुएट स्टूडेंट, एज फैकल्टी मेंबर एंड नाउ एज मैनेजर मार्केटिंग. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. आई लव इट. और आई थिंक हमारा जो एक इमोशनल और एक नॉस्टैल्जिक किस्म का माहौल है वो भी इसके साथ है. तो हम चाहते हैं कि ये बड़े फले फूले और इसके अंदर एलुमनाई जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन वो हमारे लिए बड़ी उसमें फॉर एग्जांपल हमारे QVC के एलुमनाई सर्वेज होते हैं, उसमें हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए होता है ज़ाहिर है बिजी होते हैं तो नहीं मिलता. लेकिन अगर आप हमें उसमें कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम आपके साथ सर्वे लिंक्स को शेयर करेंगे. तो उससे इंशाल्लाह GIK को अपनी रैंकिंग में और क्वालिटी इन्हेंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच.
अच्छी, बहुत मज़े की बात है कि हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, बहुत मिल के हंसे. So let's just move to the next event, which is actually mine. Though I'm not very good at the poems or reading the poetry yet, I'll try. जो हाल पूछा तो हाल दिल सुना न सके, जबान में आई फसानी तो लब हिला न सके, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए. So next up we have Naksh Art Society. They have arranged mics titled Saya. This will take you to the journey of love, deception, and finally revenge. So please, a big round of applause for Naksh. Thank you.
सेगमेंट की तरफ जाएंगे, थैंक यू लक्ष्य आर्ट सोसाइटी। हमारे साथ लक्ष्य के फाउंडर भी मौजूद हैं बैंडेड से। इनसे आप सुनना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के ये कमाल किया था और अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान एजाज है, बैच 8। थैंक यू फॉर कैचिंग मी ऑफ गार्ड। मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूँ इसलिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। मैंने CDS के इवेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे बैक इन आई थिंक 2001 और आई थिंक यासिर रशमा था, he said how would you like to be the founder of Naksh? वो क्या होता है? So in all the 4 years that we had spent at GIK, Naksh का नाम निशान कोई नहीं था, but we got a chance to kickstart something on the lines of fine arts, and that's what we intended to do. So we had a first event back in 2002. I think our last semester everybody can NC में होती थी, तो उसको invite किया, उसके काफी सारे दोस्त आ रहे, we had a pretty nice event. गवर्नमेंट सोशल के पास कैरावान आया था, उसके अंदर हमने एक आर्ट गैलरी सेटअप की, but an amazing event, but with all the support from Dr. MQ. I would like all of you to say a good prayer for him as well. So then I think about 10 years passed by when a batchmate of mine sent a link to a YouTube video, said कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो तुम GIK में? मैंने कहा क्या हो गया? So when I opened up the link, it was an event of I think well in the warehouse workshop there was probably a fashion event happening there. But I ended up realizing how much we have grown, and I was internally very happy to see something like this succeed and flourish, and causing a bit of a competition perhaps with CDS. So I think more competitive naturally under it, but it causes things to evolve and grow all the better because of that. So I'm very happy to see things like that, and I hope whoever the president of Naksh is today continues to find inspiration, and I would like to him or her, whoever the person is. Thank you, everyone. Thank you. फाइनल सेगमेंट के लिए अगेन टेबल्स आर टर्न। आप लोगों को बहुत पसंद आया, हमेशा से मुझे मालूम है, शुरू के बैचेस में स्पेशली सरप्राइज क्विज, राइट? अटेंडेंस होती नहीं थी, प्रोफेसर के पास एक ही तरीका था, इस दिन सबसे कम बच्चे आए क्विज ले। Yes? So, a brief trivia by the name of तुम्हें याद हो कि ना याद। आप में से हमें 10 क्रेजियस लोग चाहिए, 5-5 की टीमें बनेगी यहाँ पे, और तकरीबन दोनों टीमों से अराउंड 8 से 9 सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, और आपके जो मार्क्स लगेंगे, हर सवाल एक सेमेस्टर है और उसका GPA लगेगा, ठीक है? और इस तरह सवालों को जमा करते करते आपका CGPA बनेगा, और फाइनल CGPA अनाउंस करेंगे फहीम साहब, और जीतने वाली टीम को इनाम और हारने वाली को एक सरप्राइज। राइट, सो अगर स्क्रीन सेट है, पहले में चले जाएं, बिल्कुल स्टार्ट पे। और क्या करना है? Geometry. हाँ बिल्कुल। सो 10 लोग हमें चाहिए एलुमनाई में से। आ जाए शाबाश, कौन है? हिम्मत करें। है जबरदस्ती जबरी करके तो नहीं करनी पड़ेगी। आ जाए दरमियानी बैचेस ने शुरू कर दिया है। हाँ, कोशिश हमारी ये होगी कि डिफरेंट बैचेस से आए, लेकिन देखें बैच 1 और इस वक्त तो हमारे पास कोई भी नहीं। 2 टीमें बना लें, 5 इधर 5 इधर, बस ये फाइनल सेगमेंट है। इसके बाद इंशाल्लाह केक कटिंग और लंच।
सो दोबारा मैं बताता चलूँ, ट्रिविया है जेनेटिक के हवाले से, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 2 टीमें हैं 5-5 लोगों की, हर सवाल के जवाब में आपको GPA असाइन होगा। अच्छा, GPA हम वैसे ही असाइन करेंगे जैसे प्रोफेसर करते हैं अपने मुल्क के मुताबिक, ठीक है? आपने घबराना नहीं है, रीचेकिंग का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सो थोड़े ज़्यादा भी हो जाए, खैर कितने हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिस में कर तो आप 6 घंटे हो जाए। चलिए जी जी, so जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फ्रॉम बैच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया फिरदौस है, बैच 11 CS, पता नहीं बैच 11 12 13 तक आया है। ओके, anyways, I am doing marketing, so I am communication manager at a German political foundation, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Hello, assalamu alaikum. This is Saima Salman. Used to be Saima Kayu, back in GIK. मेरी अपनी फैमिली ने परफॉर्म किया था, they are sitting there. Batch 2 से. I'm a teacher. A levels के अंदर I am teaching computer science, and many of my students have been to GIK क्योंकि they want to relive the memories that I tell them I lived here. And most of them are graduate of GIK now. So this is amazing, and being back here is amazing. And Assalamualaikum, मैं शाहिद from batch 8 computer science की faculty graduate की 2002 में। Currently I play around in the open source software space, complete nerd. Nothing important to really share. Assalamualaikum, I'm Suhail Farhan, currently graduated in 2023, or currently I'm working as a design officer in Pakistan Aeronautical Complex, Kama. Thank you. Assalamualaikum, my name is Shaman Iqbal, I'm from batch 22. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर भी मैंने मास्टर्स कर लिया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, एंड नाउ आई ओन अ रेस्टोरेंट। जैसे टीम इंटरव्यूज करवाते हैं, आपने बोलने का काफी नाम दिया है, कोई कुछ लेके भागा आपने, क्या चीज दाखिल हुए आपने, थोड़ा सा तारुफ करवा। अच्छा, Amna here again. I'm working as a production engineer at Coca-Cola Jet. So yeah. thank you, Amna. Sayan Bakshan from batch 28, and I'm also from Karachi, and I currently work at Indus Motor Company as assistant manager in production. My name is Hamas Salim, I'm from batch 22, and currently I'm working in packages group as professional manager. Thank you. Spaghetti, batch 22, just started my masters from Germany. Thank you. Assalamualaikum, Umar Farooq, batch 19W. I'm currently just deputy director in सर मेरे की जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही है। इस साइड में मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, वहाँ पे मेरा बैलेंस था। राइट जी, फॉर्मेट आपको समझ आ गया है। आपके पास रफली 15 सेकंड होंगे, उसके अंदर या उसके बिल्कुल एंड पे आपने जवाब देना है। टाइमर यहीं पे एक चार्ट की सूरत में एक सर्कल होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो 15 सेकंड पूरे हो गए, उसके फौरन बाद या उसके अंदर आपने जवाब देना है। राइट, और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो जब आधा हो जाए तो काउंटडाउन शुरू कर दें ताकि इन पे प्रेशर रहे। राइट, हम इनको चैलेंज पोजीशन पे रखना चाहते हैं ताकि चैलेंजिंग पोजीशंस ले सकें आगे। So start करते हैं। Names. Let's decide the names of the teams. टीम का नाम आपको सजेस्ट करना है या हम सजेस्ट कर दें? मेरे जेब में है वैसे। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ टीम चीते और टीम चीते कर ठीक है, रैंडमली चूज करते हैं। वैसे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन चलो टीम चीते, टीम ए होगी, ठीक है, और टीम चीते माने ना माने बारे को भी पता चलेगा। हम आपसे जीत के बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बच्चे से नहीं। ये दूसरी टीम होगी,
ठीक है जी, तो टीम जीते एंड टीम जीते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास 15 सेकंड होंगे टीम जीते से पहला सवाल हम करेंगे। सबको नजर आ रही है स्क्रीन, आई होप ये काम करता होगा। लेट्स सी जी, हु एम आई? चटा डॉक्टर जवेद अहमद चट्टा, फॉर्मर डीन एफएमई। सुबह 8 बजे क्लास होती थी खरगोन की, जो कि इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी आजमाइश होती थी सर्दियों में खास तौर पे। सर से बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर क्लास 8 जो भी वैल्यूएशन फॉर्म होता था उसमें एक ही बात लिखी होती थी, सर का इनकी क्लास 8 बजे से आएगी। अगर आप थर्मोस में भी हीट नहीं ले सकते तो याद करो। राइट, सो आई थिंक मैं फुल जीपीए देना पड़ेगा फॉर टीम का है, फॉर जीपीए सेमेस्टर का एक आ गया है, पहला सेमेस्टर अच्छा जा रहा है आपका। ये पहली दफा है कि 4 जीपीए अगर अपना खराब नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीम ठीक है, अपने नाम के आपने कुछ नाम से रखनी है। ये एक चैलेंज हो जाएगा because we are all from senior batches. जहांगीर बशर, I don't know. वाजर शाह, टमाटर भट्टी, टमाटर भट्टी। टाइम इज अप। अब हम जानना चाहेंगे दूसरी टीम से, आपको इसका जीपीए ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होंगे। वैसे पहले ऑडियंस से आइडिया ले लें, आपका क्या ख्याल है? जहांगीर बशर, सर हसान कारिमो। हम सबकी जब हम E2 पढ़ रहे थे तो 2 सेक्शंस में डिवाइड थी E2। हमें जो पढ़ा रहे थे वो भी सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे, तो एक दफ़ा कोई बात होती उनको हमने कहते कि उनको तो सर हसान पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उनके मेरा कहीं उनके साथ कोई मुकाबला ना करें, मेरे वो उस्ताद हैं। हमें भी पढ़ाया, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाई है। उनकी खास बात ये थी कि थर्मोकपल पढ़ाना होता था तो ले आते थे, स्नाइपर भी ले आते थे साथ में, तो आप डरे रहते थे कि अभी आग लगी, अभी आग लगी। ये ज्यादा ना करें हमारे सीनियर्स को, आप जीपीए से रिमूव ना करें। क्या बात दे रहे मूड पे दे रहे हैं हमने, इसका कोई आपके जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा ख्याल है 2 दे दें, 2 दे दें। अब आपको करते और ये असल में टीम है और ये देगी जीपीए अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि डबल ड्रॉप वाला सिस्टम अभी हमने नहीं। अगले सवाल के लिए टीम ठीक है, रेडी हैं आप लोग? इंजीनियरिंग साइंसेस, इंजीनियरिंग ES फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस। ES ही है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोगों को शायद गलत बन जाए। ES की बिल्कुल सारी जो ग्रीन बैग है इसके सामने एक आपको नजर आएगा, वो टॉल प्लाजा टाइप का एक बैरियर सा लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों को शायद नाम मालूम हो कि जब 1993 में मोटरवेज का प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, तो ये टॉल का जो सिस्टम था ये यहाँ डेवलप हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहे थे बीच में कुछ लोग, तो उनकी वजह से जीपीए नीचे तो आएगा क्लास। थोड़े से आप बताएं, कंफ्यूज लग रहे थे? यस, सो आई थिंक थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्या 3.5 CGPA इनका साथ साथ अब कैलकुलेट होता रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टीम थीटा, अब आपने जरा नाम का ख्याल रखना है, नाम ये डॉक्टर थीटा किस बात? Where am I? जी ठीक है, ये जवाब दुरुस्त है। लैंडमार्क और इसकी सीढ़ियाँ हैं, और क्योंकि ये भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे मेरे, लेकिन
इनको चलिए मेरे ख्याल में आप सजेस्ट कर नहीं सर, इनको हम चार्ज साथ CGPA कैलकुलेट होना शुरू हो गया है। आपको ध्यान रखना है CGPA से नीचे गया तो आपको डिग्री जो आपको दी गई है हिसाब वापस देंगे। ये ना हो कि आप सीनियर से सुपर सीनियर्स बन जाए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm from Belgium. You can find my name in many places in GIK. Who am I? टाइम्स अप, आपको बताना पड़ेगा। कोई ट्रिक कर रहे हैं जो करते हैं एग्जाम में नहीं तो सर आपने पढ़ाया नहीं यार। कोई क्वेश्चन पूछे चले बस आपने बताना है 4 3 rivers right do you agree ये जवाब है Professor Martin J Rivers they both agree इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम बोल दिया है तो लिया तो है आप मेरे लिए से बात करें ये कौन सी चीज है क्या कर लिख दे मेरा चीते लिख दे CHEETO या और दूसरी TETO सो इनको दोबारा इनको 3.5 एक बार फिर इनका भी आया है। अभी तक ये ज़्यादा लिस्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं टीम TETAS Name 3 places in GIK where you can find the name brothers. Rebels Valley पर होगा Edmund. The date sheet which comes out. Edmund. Rector office है राइट सो आपने 2 जगह बताई है इनका नाम रेवर्स बिल्डिंग है के नाम पे है रेक्टर्स ऑफिस में जो है रेक्टर्स की एक्स-रेक्टर्स उसमें है। थर्ड आपने बता चुके हैं सेकंड में भी थोड़े कंफ्यूज थे कोई हेल्प करना चाहेंगे गेस्ट हाउस एक और है लाइब्रेरी उधर बिल्डिंग में एडमिन के सामने जो पौधे लगे हुए हैं उसमें भी एक उठाना पड़ेगा। 4 हमें मालूम है 3 आपने बताने थे सो 1.5 बताया आप डिसाइड कर रहे हैं 3 दे इनका 3 हो गया ठीक है आप नहीं कहना कि हमारे जैसे हमारे राइट रेडी Which faculty am I graduating from? आप तो इनको शायद जान सकते हैं। हाँ जी पहले ऑडियंस से अच्छा दूसरी टीम में बताना है White cat. ग्रीन कलर है और प्रोफेसर सिद्दीकी भी है 2 हिंट है इसके अंदर सो यस लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपने एक्स्ट्रा कोर्स उठाया था 0 क्रेडिट चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कि आप अपने क्वेश्चन का जवाब आपने इसके क्रेडिट Guess the 2 books. What's the other? Time's up. So your answer. अच्छा चलिए कॉस्ट की दुरुस्त है जवाब
दूसरा ऑडियंस थॉमस फिनी, तो फिनी एंड स्कॉस्की आधा दिया 50, तो 2 जीतिए सीजन 2 में तो हमारी यहाँ रोटेशन स्टॉप हो जाती है, थोड़ा सा रहम करें स्टीम पर। ट्रेन को 0 दिया है। अच्छा वो आप क्या गैंगस्टर्स है ना, आप दूसरे सब अच्छा CGPA बराबर हो गया। ओह मुकाबला सख्त हो चुका है, दोनों टीमें बाहर होने के लिए सख्त मुकाबला करेंगे। 2.7 GPA हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। Who am I? वो सामने बैठे हैं, सर पे हिम्मत है, कंट्रोलर कैमरे के सामने बैठे हैं। अच्छा जी, दूसरी टीम गैस करना चाहेगी? सबूर 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 भाई। सो इनको इन्होंने कॉन्फिडेंस से गलत लिखा है, मेरा ज़रा देने को दिल नहीं चाहता, इनको 1.5 दे देते हैं बस। आप अच्छा ये डबल ड्रॉप की कोई बात चली है टीम ठीक है कि नहीं बस ट्रैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे वाला वापस लेके जाएंगे। आप ऐसा करें जरा हॉल को अच्छे से काफी आप एक ही उकान डायरेक्टर साहब है। चूँकि काफी प्रॉम्प्ट करना पड़ा है आपको, तो इनको भी मेरे ख्याल में 1.5 ही देना पड़ेगा। 1.5 चलिए जी आगे चलते हैं। बस 20 से और क्वेश्चन है आपके लिए। बेटा क्या रहा? Name the first building constructed. Guest house box. Guest house box. ये HBI के पीछे मॉस्क है जो है ना, वो सबसे बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और बड़े कॉन्फिडेंस से दिया है इन्होंने, तो चौका। लड़कों ने मिलकर जीपी उठा लिया है, हालात अच्छे हैं, एडवाइजर से मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी बता देंगे। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ टीम थीटा के लिए। Who gave the first ever lecture in GIKI and what was the subject? एडवाइजर जवाब नहीं देना। एक पीटर टाइम्स अप। कोई इधर से हेल्प हो रही है मेरे, राइट? बोले आप सच्ची बोली है सही तो। चलिए आपको चांस चाहिए। Try but not। हाँ जी ऑडियंस में से बैच 1 पीटर डॉक्टर पीटर भूल गया आपको। प्रोफेसर डॉक्टर असगर कादिर। ये तो आप कैसे कर सकते थे, मैच है तो किस तरह से होना था। तो इनको अगेन 1.5 देना पड़ेगा हमें। चीटिंग की बहुत भरपूर कोशिश हुई है और नाकाम भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी बारी है। Name any 4 rectors of GIKI. सर जितना ये सोच
कहते हैं कि जब मैं गुजर जाऊँ दुनिया से तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एफआईपी पार्टनर्स मेरी ताबूत को उतारें so they can let me down one last time. Right. So किसी ने बताया चौथे पांचवे कोई जो आपके वाली कह रहे थे तो 3 वर्ष से चले फायदा हुआ वर्ष से अब्दुल्ला साहब थे और एमएन खान साहब थे सरदार साहब थे ट्रांजिशन थे एमएन खान साहब थे अब्दुल्ला साहब थे मैंने ज्वाइन किया राइट सो तीन आपने बताया क्या बना मैं 3 कमजोर है 3 बना 3 नेगेटिव मार्किंग करना चाहिए वो एडमिशन टेस्ट था मैं दूर है अभी तक आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके लिए Who am I? और कॉन्फिडेंस से फ्रंट फुट पे आके इन्होंने शॉट लगा दिया चौके के लिए टीम जीतने की तरफ चलते हैं अगला सवाल Where am I? कैफेटेरिया में वो जो एंट्रेंस है ना जहाँ पे कैंटीन का टेबल है उसके सामने ही होना पड़ेगा That is correct. मैं देख सकते हैं एक और जो दूसरी अगले सवाल की तरफ चलते हैं आखिरी चंद सवाल रहेंगे जो जिसकी उठाना उठा लें उसके बाद ठीक है और ख्याल रखें अगर ये आपका ये ओरिजिनल से ड्रॉप हो गया तो फिर साहब नई लेके निकालेंगे Where am I? टीम जीते के लिए अगला सवाल बाकी चंद सवाल इसके अपना जीपी आप सेट कर क्या चल रहा है 2.56 ये लोग लीड कर रहे हैं जीपीए में आप लोगों में ध्यान करना है अगले सवालों में I have 8 faces and 4 arms. You run towards me and you run from me. I decide your colors. What am I? Segi sawal ini sawal हमारी डिग्री आर्ट्स सेमेस्टर और 4 साल चैनल ने वो जवाब दिया है कि जिसमें प्रोफेसर की सोच में पा जाता है कि बाकी जवाब गलत है पर नंबर थोड़े देने पड़ेंगे क्योंकि बार ने फिट कर लिया उसने बेसिकली इट्स योर एकेडमिक बिल्डिंग जो हमारी है उनके 4 साइडें हैं ज़्यादातर की और 8 फेसेस हैं 4 आर्म्स हैं और आपकी जो कलर्स सेलेक्ट होते हैं एंड आप भाग के लेक्चर के लिए जाते हैं लेक्चर छोड़ के भागते हैं राइट बहुत जल्दी होती है आप सो डिग्री का आपको कुछ तो मिलना चाहिए सो आई वुड से 3.0 आपके
लिए सवाल GPA का भी GPA ऊपर है इनका, आप लोगों ने ये बतानी है। Gone and back in Komodo play, once away, now here to stay. What am I? Back on the track. A program returned, no looking back. Hint है, a program returned. No looking back. Good one. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर होता था, फिर बंद हो गया दोबारा। अच्छा, इस रिडल के हवाले से मैं इस वाली स्पेशल, तो ये चैट GPT ने बनाया, हमने उसको डिस्क्रिप्शन दी, उसने एक लंबी सी नज़र बना दी, हमने कहा इसको सिंपल करो, उसने एक और बना दी, और सिंपल करो, फाइनली ये निकली उसमें। सो हम नॉलेज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अच्छा, राइट, सो इनका चौका 4। CGPA में जरा बता दें दोनों टीमों का क्या क्या, बाकी सवालों को हम जा रहे हैं। आप करें रीचेक कर लें कि जो टेबल्स डन है। अच्छा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम। ठीक है, Where am I? Sports complex. अच्छा, ये क्वेश्चन बनाने में मेरी हेल्प की है एलुमनाई है, ग्रेजुएट से है, इस वक्त फैकल्टी में है, मेरी साइंसेस में डॉक्टर असद, थैंक यू सो मच। और बाहर से घर में काम था। सो डॉक्टर फाद जवाब सही है? ठीक है जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, क्योंकि मैंने भी कल इनको कॉल की कि भाई ये क्या है आपको कॉल की बात में, फिर मुझे भी बता दो ये क्या है, क्योंकि इन्होंने टर्न भी किया हुआ इसको। अब वो जो ऊपर है ना, मैंने कहा ऐसे बादल तो मैंने आज तक नहीं देखे वहाँ। सो इन्होंने टर्न भी किया हुआ तस्वीर को साथ। सो चौका 4, another 4, माशाल्लाह, कहीं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टीम थीटे के लिए। Where am I? आंसर भी टाइम है, मशवरा करके आप दे दीजिए। फाइनल आंसर लाइब्रेरी के ऊपर। लाइब्रेरी है नहीं है। जो एडमिन बिल्डिंग है ना, उसकी विंडोज है, साइड व्यू है ना, ये वो एडमिन ब्लॉक का फ्रंट व्यू है, ये छोटे से डोम्स भी हैं उसके सामने। सो लेट्स गो राइट 0 मिनट। चलिए टीम की तरफ चलते हैं। मुश्किल सवाल एक दो है, उसके बाद ये सर भी हैं जिनके नाम पे हमारे ऑडिटर लिखा हुआ है। गुड, मेरा ख्याल है इसका जवाब नहीं मिलेगा। एक्सचेंज करके FYP मार्कर चेंज होने लगेगा। आपके साथ भी चेंज कर देंगे। अच्छा 4, गुड जॉब। आपके लिए सवाल है। And the last question मेरे नजर आ रहा है, आइडेंटिफाई कर लेने ये जिन पे आ रहा है। كيف ناس عليك
किस्मत अली है, नूर वली है, Time's up. हसन है, So you have to give one answer. वो हर गोला गुड़ को लाड़ Habibullah Bey, one of the founders of the institute. ये इधर ही कैंपस बनने से पहले माशाल्लाह ये सब फोरफादर्स बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं. ये आखिरी सवाल था आज का. अब फाइनल CGP अनाउंस करने के लिए मैं डायरेक्टर एग्जामिनेशन साहब को नाम करूँगा. और आपने ये भी बताना है कि ये क्या चक्कर है कि यहाँ कम GPA वाले भी माशाल्लाह GIK से जाने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. Assalamu alaikum and a very warm welcome from me to all the alumni who could make it here. अभी मुझे नजर नहीं आ रहे sometime थोड़ी देर पहले मैंने देखा था हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट माजिद खान. ये जब यहाँ से गए थे तो he has an exact GPA of 2.00 और वो भी part of it in my opinion belongs to his academic advisor which was no other than Professor Parvez Mubarak. लेकिन जब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गए और अगली दफ़ा वहाँ के लोग ओपन हाउस पे हमारे बच्चों का यहाँ पे इंटरव्यू करने आए तो उन्होंने एक शिकायत की कि जी आपने इसका GPA 2.00 क्यों दिया है. He is caliber, he has the caliber and he is good for a much higher GPA which goes as rightly pointed out a testimonial that the GPA at the time of graduation, at least for some of you, they don't really reflect the capabilities and the competencies that you have developed. But nevertheless, GPA is a necessary evil. और आज के मुकाबले में भी शायद मुझे इसीलिए जहमत दी गई है. जो अंडरलाइन है ना आखिरी दोनों टीमों का फाइनल से cumulative GPA of is 2.54. So आपको लेकिन of course the younger ones somehow they have a quick sharp memory and they have been able to and they are graduating with 3.14 and जीतने वाली टीम के लिए प्राइज है, जीतने वाली टीम के लिए दूसरी टीम के लिए सरप्राइज है. सो फैंक साहब आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली डिग्री तो हमें नहीं दे सकते इसके साथ ही लें थेरेपी के लिए चले निकाल लें इसको हेल्प करें. सो आप सबके लिए अप्रिसिएशन GIK इंस्टीट्यूट की चाहिए कि सलमान से वाई नहीं है यहाँ से आगे थी लेकिन सलमान से हेल्प नहीं आई. सलमान कहाँ पर आए उन्होंने भी घर वन बाय वन आप सबके लिए एक है. इसमें पेन क्रीम है, कप है और गुड वन. नेक्स्ट आपका नाम दोबारा था नहीं वो है. Congratulations. जब हम कॉन्वोकेशन में डिग्री देते हैं इससे पहले हम एक रिहर्सल किया करते हैं. मेरा ख्याल है आपको वो याद रह गई है. रिहर्सल में हम जो डिग्री होल्डर है वो अपने पास वापस रख लेते हैं बट ऑन द एक्चुअल डे टू गिव इट अवे. उसमें लिखा होता है कि आप क्लियरेंस करा के डिग्री. इसमें भी लिखा हुआ है कि अपने खर्चे पे गिफ्ट दे. Next, please, Adi. Good one. Adi.
फैकल्टी क्लब और वहाँ पे लंच भी है और वी हैव वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह। प्लीज स्टे पुट सिर्फ 10 मिनट और उसके बाद हम इंशाल्लाह ओपन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा ऐसा नहीं होगा, बाबा ये टीम नहीं है, ये इससे आपको याद आता है एक लेजेंडरी जीकी का जो मैं चाह रहा था कि हमारे जो सीनियर से वो पहले उनको अगर ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं है तो सोचा नहीं करते। तो अगर किसी को याद हो, बाबा बाबा केमिस्ट्री यस, तो जी का एक बहुत बड़ा लेजेंड था। So we have two major announcements. The first one is that we will have a group photo in front of the electrical engineering building on the auditorium stairs, where we all the time have our graduation photograph. The second announcement is that buses will leave from outside this auditorium and to the faculty club. We have arranged lunch there for you guys, and we would request you to please not take your individual vehicles, rather take the buses, use the buses for transport, because it will get crowded over there. Okay, so now I will officially close this program and the reunion. So ladies and gentlemen, that is all from the auditorium. The next events we have planned are spread throughout the campus. इस यादगार इवेंट के मौके इसके खिताब से पहले मैं चाहूँगी कि सलाम पेश करूँ और शुक्रिया अदा करूँ उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। गुलाम खान साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेकर वो मजदूर, वो माली, जिन्होंने GIK को बनाने में और उसको सजाने में अहम किरदार अदा किया, और वो तमाम लाले जिनकी वजह से हमें एक बेहतरीन इकोसिस्टम मिला, जिनसे ना सिर्फ हमने इस्तेफादा लिया, हमारी से पिछली जनरेशन ने इस्तेफादा हासिल किया और इंशाल्लाह हमारे से आगे आने वाली जनरेशन भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगी। A special thanks to our rector, pro-rector, admin and finance, Dr. Imran, Dean Student Affairs, Dr. Zabir, Dean FES, Director Facilitation Farooq Majid, Deputy Director Procurement Philippe Baye, Managing Director Ali Shaukat, Samahat Hussain, and all the organizing committee team who put endless effort to make this reunion a successful event. Until we meet again, may life's adventures treat you well. Farewell and best one wishes to each and every one of you. Let us put our hands together for celebrating the 30 years of excellence of GIK. Final closing video, 30 seconds, please, just 30 seconds, nostalgia. I will request you to clap during final video. Thank you. गलत वीडियो लगेगा ये तो स्टार्ट Thank you everyone. Have a blessed time. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लंच से जस्ट पहले केक कटिंग सेरेमनी है। आपको मालूम है GIK के 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट अभी ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन टू दिस सेरेमनी, और डीन्स, डायरेक्टर्स और हमारे
एलुमनाई एसोसिएशन के गेस्ट और बैच 1 के स्पेशली और भी जो साथी आना चाहें, प्रोफेसर जमील नबी आप इधर हैं, ठीक है, और मुगल साहब भी, परवेज़ मुगल, सेकंड बैच के स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ हमें ज्वाइन करें यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी के लिए। Ladies and gentlemen, esteemed guests, faculty members, and dear students, welcome to this momentous occasion as we celebrate 30 years of brilliance of Ghulam Ishaq Khan Institute. Over the past 3 decades, GIKI has stood as a beacon of academic excellence, fostering innovation, leadership, and a commitment to knowledge. Today, we gather not only to reflect on our rich history, but also to look forward to the promising future that lies ahead. As we commemorate 30 years of excellence, let us take a moment to acknowledge the dedication of our founders, the tireless efforts of our faculty, the enthusiasm of our students, and the unwavering support of our alumni. Together, we have created a legacy that continues to inspire and shape the future of future generations. And now, without further ado, let us come together for a special moment, the cutting of the cake, to mark the beginning of our celebration. प्रोफेसर जुनेद मुगल भी प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लें, थैंक यू। To make this moment even more memorable, I invite the Honorable Rector, esteemed Pro-Rectors, Deans, Head of Departments, and Office Bearers of Alumni Association to join us on stage for the cake cutting ceremony. Your presence honors us, and we would be delighted to have you as a part of this celebration. As we stand here surrounded by the warmth of accomplishment and the spirit of progress, let us join together to cut the symbolic cake that represents the sweet success of 30 years of academic brilliance. So you may cut the cake. मीडिया से कोई एक जो है ना करीब से भी लें, क्योंकि केक की ऊपर से नजर नहीं आती। तो मैं खिला ले ली ना कटिंग टाइम के वाली एक कोई ऊपर आ डायरेक्टर साहब आपको याद करें तो आगे आइए। शायद देता सरा था देता सरा था नहीं एक दोनों साइड से May this act symbolize the unity and shared vision that has propelled GIKI to unparalleled heights. Just as this cake is shared among us, let the spirit of excellence continue to be shared and cherished within the GIKI community. Thank you everyone for being part of this special moment as we embark on journey ahead. Let us carry the torch of excellence, innovation, and camaraderie that has defined the Ghulam Ishaq Khan Institute for the past 30 years. ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में प्यारी प्यारी उन बातों में ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों यादों में तू
ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों, यादों में तू, 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 यादों में तू। मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए, अब ये दुआ मिलकर सभी, छूटे ना अब ये साथ कभी। इस दोस्ती की छाँव तले सब मुश्किलों में हम साथ चले, एक दूसरे से खुशियाँ सभी, दिल ये कहे हो, यादों में तू, यादों में तू, यादों में तू, यादों में तू, ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी।